वेल स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरीज ऑफ लर्निंग या शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? यू नो दैट टीचिंग प्ले अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एंड लर्निंग ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग। लर्निंग तभी होती है जब क्या होगा? टीचिंग होगी। टीचिंग नहीं है तो फिर लर्निंग नहीं है। इसलिए जो है बोथ गोज सिमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्यों? व्हेन टीचिंग इज देयर देन लर्निंग इज आल्सो देयर. It is very important for pupil teachers to understand the nature and principles of teaching. जब तक हमें जो है उसके सिद्धांत पता नहीं होंगे वो क्या है, तो हम उसको टीचिंग को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे. Teaching is a complex art of guiding students through a variety of selected experiences towards the attainment of appropriate teaching learning goals. This is tripolar process is based on certain principles and learning laws and theories. For performing this task effectively, a teacher surely needs some pre planning and theoretical understanding of a number of activities that are desirable to set his behavior in tune with the task performed by him. Theory of teaching supply and equip him with the such theoretical understanding and framework. तो शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयुक्त किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द थ्योरीज ऑफ टीचिंग, जिसमें कर्लिंगर की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ interrelated construct, definitions, preposition, which present a systematic view of teaching by specifying relation among variables with the purpose of explaining and predicting. In this definition, main emphasis has been given on teaching variables. जो चर हैं, शिक्षण के चर जिसे कहते हैं वेरिएबल्स, तो यहाँ पर तीन तरह के चर होंगे. दे आर द थ्री टाइप ऑफ द वेरिएबल इन टीचिंग. फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टीचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अनाश्रित चर जिसे कहते हैं. दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. दो आर द स्टूडेंट्स जो टीचर और कंटेंट पर डिपेंड रहते हैं, जिसे हम आश्रित चर चर कहते हैं हिंदी में. और उसके बाद तीसरा होगा आपका इंटरव्यूइंग वेरिएबल, जिसे हमें इंटरव्यू करना, जिसे हमें आगे इंटरवीन करना, जिसे हमें देना है टीचर को, दैट इज द करिकुलम. तो इस तरह से कर्लिंकर की डेफिनेशन के आधार पर हम कहते हैं कि ये तीन चर जो हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन कौन? फर्स्ट इज द टीचर, सेकंड इज द स्टूडेंट एंड थर्ड इज करिकुलम. सो इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस. ब्रूनर की डेफिनेशन है. We defined that theory of teaching as explanation, general methodology of teaching. ऐसे बीओ स्मिथ की भी डेफिनेशन है, एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है. तो अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दीज स्टेटमेंट वी कैन सी दैट इट आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चन. वन, How do teachers behave? टीचर किस तरह से व्यवहार कर सकता है? क्योंकि उसके बाद फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस भी है आगे आपके सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि टीचर किस तरह से बिहेव करता है. दिस कैन बी जज्ड बाय फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस. Why do they behave as they perform? इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? With what effect they perform? किस वो इफेक्ट, ये क्या प्रभाव होता है उस परफॉर्म का? What teaching behavior is the cause and learning among student is the effect. और यह इसका इफेक्टिव है क्या? टीचिंग एंड लर्निंग के. इट कंसीडर the teacher behavior the cause of student learning effect. It explains, predicts and controls the ways in which the teacher behavior affect the learning of students. A theory of teaching must answer the question of teaching for efficient learning. Now, need for a theory of teaching. Theories of टीचिंग की थ्योरी की आवश्यकता क्या है, अर्थात शिक्षण के लिए जो सिद्धांत है उनकी क्या आवश्यकता है, इस बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू एनएल गेज, थ्योरी ऑफ टीचिंग में बी यूज टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग. तीनों के लिए. वन इज द इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग, दूसरा प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना, एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग टीचिंग को कंट्रोल करने.
Next, by using it, a teacher can successfully achieve teaching objectives. It explains the relationship between different variables in the teaching process. It explains the relationship between the teaching and learning, and it explains the relationship between different variables in the teaching process. It explains the relationship between teaching and learning and identifies the common factors. इसके साथ साथ कौन से ऐसे common factor है which are related to teaching and learning, जो शिक्षण और अधिगम के साथ संबंधित है. It helps in the development the instructional design. It helps the teacher to understand the nature of teaching. This helps the teacher in developing appropriate learning structure. Teaching objectives may be successfully achieved by the use of teaching theory. उसके बाद आपका teaching theory gives the knowledge about the assumptions of teaching activities which provide guideline for organizing teaching. Teaching theory provides the scientific basis for planning, organizing, leading, and evaluation the teaching. Yes, these points you have to keep in your mind. One is the first is the planning. किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या करना है. Already we have discussed that there are the 3 phases of the teaching: pre-active phase, interactive phase, and post-active phase. तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर लीड करना, फिर इवैल्यूएशन करना कि क्या रहा क्या नहीं रहा. The teaching theory The effective teachers enable produced with the use of teaching theory. The instructional designs can be developed with the help of theory of teaching. The pupil teachers can develop teaching skills and competency by employing the knowledge given by theory of teaching. This helps pupil teachers in developing the teaching skills by employing the knowledge given by the theory of teaching. Teaching theories help to study the classroom teaching problems scientifically. Now, basis of theory of teaching, जो हमारी जो theories हैं, teaching की शिक्षण की जो सिद्धांत हैं, उनके क्या basis है, उनका आधार क्या है? Teaching is an art as well as science. Hence, always know, हमेशा ध्यान रखना, teaching is not only an art, but it is also a science. So it is called as the pedagogy, because the art, how you present your subject matter, how you present it before the learner, and it is the science because you go systematically, one by one. When you complete one topic, then go another, then another, then another. In this way, it is the science. Hence, so we can say that teaching is not only an art, but also it is a science. Hence, the elements of teaching must be analyzed to understand the nature of teaching. Cronbach has stated that theories of teaching can be based upon theories of learning. Teaching activities facilitate learning structure. There is close relationship between teaching and learning. Robert M. Gagne, G-A-G-N-A, Gagne नहीं पढ़ेंगे इसको Gagne बीच वाला G silent है. Robert M. Gagne is of the view that conditions of learning are the basis of teaching. The task of teaching is to generate learning conditions. Anil Gage has pointed out 4 aspects of teaching. The first one explains why do teachers behave as they do in teaching. The second one explained how can the teacher behavior is influenced by the learning of pupil. The pupil behavior is modifiable. B.O. Smith has pointed out 4 aspects of teaching theory. These are as statements for variables of teacher behavior. Establish the relationship between teaching variables. Formulation of hypothesis for the relationship between teaching variables and teacher behavior. Explain the teaching variables and teacher behavior with reference to psychological and social situation. Now, types of theories of teaching. There are 3 types of teaching theories. The first one is the formal theory of teaching. औपचारिक सिद्धांत. Next, descriptive theory of teaching. विवरणात्मक या वर्णनात्मक सिद्धांत. Next, for normative theory of teaching. That is निर्देशात्मक सिद्धांत. Students, in many of the book there may be the different type of the theory or various theories, but in your syllabus there are only 3 theories has been given. So we will go only this. We will discuss only of these 3 theories. आपकी किताबों में बहुत सारे जो अलग अलग राइटर में बहुत सारी थ्योरी दी होंगी, किसी में 15, किसी में 20, किसी में कुछ, किसी में कितने.
लेकिन आपके जो सिलेबस में है, वो सिलेबस में केवल 3 थ्योरीज हैं, फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी। औपचारिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत और निर्देशात्मक सिद्धांत। हम यहाँ पर इन 3 सिद्धांतों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देन द फर्स्ट कम्स फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। The theory which is based upon certain logic, certain metaphysical, epistemological assumptions and propositions is known as formal theory of teaching. The following are the 4 philosophical theory of teaching. इसके अंदर जो है 4 थ्योरी हैं। फर्स्ट इज द म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, सेकंड वन द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, थर्ड वन द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द लास्ट वन इज द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत। शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत अंतर्गत 4 थ्योरीज है। और उसके बाद दूसरा हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। डिस्क्रिप्टिव में हम जो चलते हैं उसमें है आपके डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसके अंतर्गत है आपका The theory which is based upon empirical evidence and observation is called descriptive theory. the purpose of descriptive theory is to predict the relationship and effectiveness of variables of teaching. Garden and Brunner have formulated such theories of teaching, जिसके अंदर जो है आपके दो है। पहला है आपका instruction theory of teaching और दूसरा है आपका prescriptive theory of teaching. prescriptive theory of teaching। और जो थर्ड टाइप है आपका, थर्ड थ्योरी है, वो है आपका नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। निर्देशात्मक सिद्धांत, शिक्षण का निर्देशात्मक सिद्धांत। The normative theory of teaching may be developed because it is difficult to control the human subjects in experimental situations. It is called as normative. Normative means निर्देशात्मक. The learning theory have been developed under controlled condition by conducting experiment and कहाँ पर and animals. The normative theory explains the relationship among teaching variables on the basis of observation in normal teaching conditions. This category has the 4 theory of teaching. Normative के अंदर 4 थ्योरी है। पहला आपका The cognitive theory of teaching, संज्ञानात्मक जिसे कहते हैं, theory of teacher behavior, and next one is psychological theory of teaching. The general theory of teaching. Now we come first the formal theory of teaching. In the formal theory of teaching, these theories are based upon the metaphysical and epistemological proposition. Epistemological, ज्ञान मीमांसा जिसे कहते हैं। There are earlier theories which reflect the current social practices. इसके अंदर है फर्स्ट आपका म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। This theory conceives that the teaching process helps to recollect or unfold that knowledge with the questioning techniques. The teacher brings his knowledge at the conscious level of this child. The focus of this theory is on the self-realization. Socrates has originated this theory. Socrates, सुकरात जिसे कहते हैं हिंदी में, उसने जो म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग दी। The heredity plays an important role in teaching process. The second one is the communication theory of teaching. How we have to communicate, how the teacher communicate in the classroom also. This theory of teaching based upon assumptions that the teacher possesses all the knowledge and information which students does not possess. The most appropriate way for the student is to learn this knowledge that the teacher presents, explains, demonstrates, performs in classroom. Next is the molding theory of teaching. mold karna. John Dewey is the advocate of his molding theory of teaching confined to impart the knowledge of the students. The third theory has the focus on shape, form, and mold of the student behavior. The basic assumption about the human nature which the theory takes in consideration is that human personality is formed, shaped, and molded by their environment. Next is the mutual inquiry theory. Mutual inquiry. Mutual mean hota hai parasparik. The main assumption of this theory about the nature of knowledge is that the whole body or recorded fact as information knowledge which in a school and outside the school is generally substituted for inquiry. True knowledge is inquiry upon used to apply efficient method and relevant information for solution of the problem. Now, these are the 4 theories which belong to the
फॉर्मल थ्योरीज, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इनके नाम आप जरूर याद रख लेना। फॉर्मल ऑफ टीचिंग में आपके 4 हो गए: म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, और उसके बाद द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग, और दूसरा है आप हमारा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसके अंतर्गत ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें मेन है आपका इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, वर्णनात्मक सिद्धांत। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द empirical evidence, अनुभवजन्य प्रमाण जिसे कहते हैं, and the observation. The purpose of this theory is to predict the relationship and effectiveness of variables of teaching. तो इसके अंतर्गत आपका थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता है, इंस्ट्रक्शन क्या है? A theory of instruction consists a set of the proposition stating the relationship between, on and one hand, measure and outcome of evaluation, and on the other hand, measures both the condition to which the learner is exposed and variable representing characteristics of learner. These are the three models assigned to three theories of instruction. तो इसके अंतर्गत अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या क्या इसके गुण है, विशेषता है, इसके बारे में देखिए। A theory of instruction is normative. It sets up criteria having a high degree of generalizability and describes condition for meeting. These characteristics are given by J.S. Brunner, याद रखना, जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, J.S. Brunner, याद रखना। दूसरा पॉइंट है, a theory of instruction is prescriptive in nature. It describes the most effective procedures for achieving the goal and provides a benchmark against why any instructional procedure may be evaluated. A theory of instruction must be based upon the theories of learning. A theory of instruction will direct the structuring of knowledge so that it can be easily grasped by the learner. A theory of instruction will specify experiences that will tend to make the learner willing and able to master the curriculum. A theory of instruction will specify the most effective sequencing experience. A theory of instruction will specify the nature and pacing of reinforcement in the process of instruction. तो इस तरह से a theory of जो instruction है उसके मेन 3 फंक्शन हैं। पहला है रिसर्च और डेवलपमेंट में, Second, curriculum improvement. और तीसरा है रेलिवेंसी डेफिनेशन। उसके साथ क्या डेफिनेशन होंगे, क्या रेलिवेंस, क्या संगत, तर्क संगत हैं या नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। उसके बाद आपका आता है गैनेज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो गैने ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है आपका एटकिंसन डिसीजन थ्योरी, एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। तो इसके अंतर्गत ही ये आपके हैं। और अब उसके बाद जो लास्ट है आपका, that is the normative theory of teaching. Normative theory, The learning निर्देशात्मक सिद्धांत शिक्षण का। The learning theories have been formulated by designing experiment in controlled situation. Therefore, they have a less generalization. Teaching theory should have high generalization. जो भी टीचिंग थ्योरी है, इनका जो सामान्यीकरण है वो बहुत ज्यादा है। क्यों होना चाहिए, क्या क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। किसका बिहेवियर? ट्रेनिंग नहीं है, ये एजुकेशन है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर क्या? एजुकेटेड, दे आर नॉट ट्रेंड। ट्रेनिंग किसको दी जाती है? जानवरों को। तो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए तो इसका जनरलाइजेशन क्या होता है कि अच्छी तरह से करना है या होना चाहिए। मोर रिगरस कंट्रोल कैन नॉट बी इम्पोज्ड by designing experiment on human subject. Therefore, we need normative theory of teaching. तो इसके अंतर्गत आता आपका पहला द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जो एनएल गेज ने दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। उसके बाद है आपका थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, एक अध्यापक के व्यवहार का सिद्धांत, तो किस तरह से वो बिहेव करता है। तीसरा है द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। उसके बाद है लास्ट, दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग, टीचिंग का या शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। नाउ वी गो फॉर द कंक्लूजन। यस मैम। ऑल द टीचिंग थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय रेस्पेक्टिव प्रोपेगेटर्स, जिसने प्रतिपादन किया है,
try to explain in their own ways the nature of teaching and measures helpful in carrying out the task of teaching. So it's very necessary for the teachers to keep in mind the theories of